Maulana Mahmud al-Hasan. He gained the title Shaykh al-Hind after his demise. During his lifetime, when people used to call him with big titles, he used to dislike it. And that was the practice of many scholars. They didn't like the titles. And they used to be very humble. And the last week with the story we were covering, how humble he was, being a teacher of Darul Uloom Deoband. He seen a student standing, and he went to visit his lodge, and seen without the bed. He carried himself a bed for him, and he brought to him, and he gave it to him. The student felt embarrassment that teacher is bringing a bed for him. But that was our elders, that simplicity they had and humbleness they have. So today's the title of the incident is the respect for contemporary scholars. So एहतराम अब हम उम्र उलमा का. Mufti Muhammad Shafir recounted someone held a big marriage reception in Deoband, to which the teachers of Darul Uloom Deoband were invited. तो मुफ्ती मोहम्मद शफी फरमाते हैं कि किसी ने बहुत बड़ी शादी रखी देवबंद में, जहाँ पर बहुत सारे असातिज़ाए देवबंद हाजिर थे. Shaykh al-Hind rahmatullah alayhi, along with Maulana Hafiz Muhammad Ahmad and others, went to that reception. So Shaykh al-Hind himself was invited. Maulana Hafiz Muhammad, who was the son of Maulana Qasim Nanotwi, means he was the son of one of the founders of Darul Uloom Deoband. And he was appointed as the fifth muhtamim of Darul Uloom Deoband. So he was also invited in that reception. So similar age group. Shaykh al-Hind sat in the company of the masses. आम लोगों में Shaykh al-Hind rahmatullah alayhi बैठे. However, acts considered contrary to the Sharia were taking place there. और उस शादी के अंदर ऐसे कुछ काम हो रहे थे जो शरीयत के मुनासिब नहीं थे. A number of Darul Uloom teachers asked Shaykh al-Hind if he would advise the host to abstain from this awkward behavior. तो Shaykh al-Hind के पास लोग आए, कहने लगे आप में से चाहकर आप जो दाई है, जिन्होंने दावत दी है, इनको थोड़ा समझाए ऐसे काम ना किया करें. While indicating towards Maulana Hafiz Muhammad Ahmad, Shaykh al-Hind replied, in the presence of one's elder, you have come to me. जब आकर इनसे गुजारिश की कि आप दाई से बात करें, तो ये फरमाते हैं कि हज़रत शेख al-Hind ने जवाब दिया, जब बड़े बेटे हैं और तुम मेरे पास आए हो, हालांकि वो हम उम्र थे. It would be lack of etiquette on my part to say anything in their presence. So ये मेरे लिए बेअदबी है कि मैं उनके होते हुए कुछ कहूँ. And he made this observation even though Maulana Muhammad Ahmad was actually his contemporary. ये जुमला उन्होंने कहा है हालांकि वो उनके हम उम्र थे. However, Allah had granted Shaykh al-Hind a depth of humility that made him unaware of this. फरमाते हैं अल्लाह ने उनको बेइंतहा तवाज़ु दिया था कि उन्होंने अपनी कोई कदर और मंजिलत रखी नहीं. Therefore, it came naturally to him to regard himself as a subordinate to his peers. वो कहने लगे कि कुदरती यानी इनका मिजाज ऐसा था कि गोया कि इनके अंदर तवाज़ु इतना ज़्यादा कि वो अपने आप को छोटा समझते थे अपने हम उम्र से भी. The senior Maulvi, ये टाइटल है. Even though Shaykh al-Hind greatness was already well established by the time Mufti Muhammad Shafi was born, and he did not appreciate being addressed by lengthy and honorific titles. So Mufti Muhammad Shafi रहमतुल्लाह अलैह जब छोटे थे तो देखते थे शेख al-Hind रहमतुल्लाह अलैह को और फरमाते थे कि वो पसंद नहीं करते थे बड़े बड़े अलकाब. Even the title of Shaykh al-Hind would not come into in popular use until much later. अब हम इनको शेख al-Hind से बुलाते हैं, उस ज़माने में लोग उनको शेख al-Hind से नहीं बुलाया करते थे, इसलिए कि इनकी ये जद्दोजहद में ये शुरुआत में यही थे. पहले तो खिलाफत मूवमेंट निकाला और फिर मुसलमानों को आज़ाद कराने के लिए और मुसलमानों को अपने दीन की आज़ादी दिलवाने के लिए, फिर दूसरा रेशमी रुमाल मूवमेंट निकाला. तो ये बहुत मुतहर्रिक होते थे. तो इनके इंतकाल के बाद ये इंतकाल के करीब इनका लक़ब पड़ा शेख al-Hind, हिंद के शेख. So nonetheless, in spite of his evident distaste for it, he was referred
to as a senior Maulvi Sahib. So even though he didn't like the titles, but he was referred to Bade Maulvi Sahib, senior Maulvi Sahib. It is well known to his friends and relatives that whenever the senior Maulvi Sahib knocked at the door, he would simply announce himself with servant Mahmood is here. ये बात मानी जाने वाली थी कि जब भी ये मौलाना तशरीफ लाते किसी के घर पर और दरवाज़ा दस्तक करते, तो ये कभी नहीं कहते कि मैं मौलाना आया हूँ, ये कहते कि खादिम महमूद आया है, खादिम महमूद आया है. And while teaching at Darul Deoband, with the modest resources, Shaykh al-Hind launched the famous international Reshmi Rumal movement. So ये पढ़ाने में बहुत सुबह शाम पढ़ाते थे. तो उन्होंने पढ़ाने के ज़माने में ही एक बड़ी मूवमेंट चलाई जो रेशमी रुमाल मूवमेंट, हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत इम्पोर्टेंट मूवमेंट थी. This was the movement which has liberated India and given them the freedom. One of the greatest movement. The scholars of Darul Deoband had nonetheless some difference of opinion about this project. तो मदरसे के अंदर बाज़ असातिज़ा थे जिनको इस बारे में वो मुत्तफिक नहीं थे. मौलाना Muhammad Ahmad and Maulana Habibur Rahman, who were the administrative supervisors, held the view of Darul should engage with the movement in the quietest manner so as to continue ministering the vital educational needs of the Muslim community. तो कहने के बाद उस असातिज़ा का मिजाज ये था कि दारुल ऐसे हुकूमती कामों में और पॉलिटिक्स के कामों में इन्वॉल्व ना हो, खामोशी से हो, जो हो खामोशी से हो. क्यों कि तालीमी इदारा है, कहीं तालीमी इदारे को नुकसान ना पहुंचाए. So no such step should be taken on this campus that would be likely to jeopardize the institution's ability to fulfill this role. कोई ऐसा कोई काम ना हो जिसकी वजह से ये इदारा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, दारुल कॉम्प्रोमाइज हो जाए हुकूमत की नज़र में या हुकूमत के साथ. इसलिए उस वक्त तो ये लोग ही थे ब्रिटिश. Contrary to this position, Shaykh al-Hind heart and soul were preoccupied with raising the banner of Islam and the movement of Indian independence. इसके बरखिलाफ शेख उल हिंद के दिल और जान के अंदर ये था कि इस्लाम का नाम बुलंद हो और हिंदुस्तान आज़ाद हो. On one occasion, a private meeting was convened in his room with those Darul Deoband who did not share his viewpoint. तो जो इनके बिलमुकाबिल मौलाना मोहम्मद अहमद, मौलाना हबीबुर रहमान, इन सब की एक प्राइवेट मीटिंग हुई कमरे के अंदर. Mufti Mahmud Shafi, who was very young at that time, somehow managed to get inside and witness their heated debate. कहने लगे जब मुफ्ती मोहम्मद शफी बहुत छोटे थे, मुफ्ती तकी के वालिद उस वक्त, वो कमरे में चले गए और वो उनका जोर और शोर वाला जो डिबेट था कि दारुल देवबंद खुल्लम खुल्ला इन उमूर में शिरकत करना चाहिए या खामोशी से करना चाहिए. And being so inexperienced, Mufti Shafi Sahab, he could not follow their debate. छोटे थे तो उनका मुकाबला और उनका मुआरदा समझ नहीं पाए. But he certainly recalled that it was a lengthy affair. इतना ये ज़रूर याद है कि लंबी बहस थी. And the association of Darul Deoband with the political movement was the bone of the contention. इतना ज़रूर याद है कि the topic was that how can we associate our Darul with the political movement, with transparency or with politeness, silently. Now, withstanding the difference of opinion, everyone at Darul Deoband fully cooperated with Shaykh al-Hind. तो जो भी इख्तिलाफ था उसके बावजूद भी लोगों ने शेख उल हिंद के साथ दिया. He also maintained close and cordial relations with those who differed with him. जो इनके खिलाफ राय थे तब भी उनके साथ अच्छा मामला इख्तियार करते थे शेख उल हिंद हमेशा. However, when he left for Hajj and was imprisoned in Malta, वो एक दफ़ा हज के लिए गए, वहाँ से शरीफ मक्का ने उनको अंग्रेज़ों के हाथ भेज दिया. वहाँ से वो जेल में चले गए माल्टा. Some of his students or followers spread the rumor after a breakdown of relations between him and the directors of the Darul Deoband that now he has broken the tie with Darul Deoband. वो जब जेल में थे
तो उनके फॉलोवर्स में से ये बात किसी ने फैला दी, इसलिए कि दारुल देवबंद के जो असातिज़ा इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे, उनकी वजह से हज़रत शेखुल हिंद ने दारुल देवबंद से ताल्लुक को ख़त्म कर दिया. Therefore, after his release from Malta, Sheikhul Hind was extremely hurt to learn that such rumors had been deliberately circulated in his absence. जब उनको पता चला ऐसी अफवाहें फैलाई गई कि मैं और दारुल देवबंद अलग अलग हो गए हैं, तो उनको बड़ी तकलीफ हुई. When he arrived at Deoband, in addition to the staff of Darul, almost half of the local population was gathered at the railway station to greet him. जब वो देवबंद वापस तशरीफ लाए जेल से, तो जो मदरसे के असातिज़ा भी थे और आधा देवबंद की कौम, वो सब के सब रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी उनको सलाम करने के लिए. It was assumed that he would go straight to his home, और ये सोचा गया ये यहाँ से सीधा घर जाएंगे. However, he announced that he would go straight to Darul Deoband and meet everyone there, and which sufficed to put an end to the aforementioned rumors. तो वो वहाँ से सीधा देवबंद गए और सबसे मुलाकात की, और जो अफवाह फैली थी उसको झूठ साबित किया, और वो वहाँ से फिर बाद में घर गए. मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब recalled a competent teacher at Darul Deoband who was Sheikhul Hind student. कि मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब एक और किस्सा नकल करते हैं, कहते हैं एक बेहतरीन उस्ताद दारुल देवबंद के, वो शेखुल हिंद के शागिर्द थे. was offered a job at college, उनको जॉब मिली कॉलेज में, और उस जमाने में भी कॉलेज यूनिवर्सिटी कहते थे लोग, बड़ी बात समझते थे. with an attractive salary, बहुत अच्छी तनख्वाह के साथ. he consulted शेखुल हिंद and pleaded, उन्होंने शेखुल हिंद से मशवरा किया और गुजारिश की. I teach here from 8 to 10 hours per day and spend the rest of my time on preparing for other lectures. कि मैं रोजाना दारुल देवबंद में 8 से 10 घंटे पढ़ाता हूँ, और फिर बकिया टाइम है वो लेक्चर प्रिपेयर करने में मेरा गुजर जाता है. It hardly leaves any time for giving public talks or any academic work. ये मुझे दारुल देवबंद की मसरूफियत की वजह से मेरे पास वक्त बाकी नहीं रहता, ना अपने ज़ात के लिए, ना पब्लिक या कौम के अंदर कोई बयानात के लिए, ना कोई तालीमी काम के लिए. The college will demand fewer teaching hours. कॉलेज के पास जब अगर नौकरी करूंगा तो थोड़े से घंटे करने पड़ेंगे. In my spare time I would be in better position to serve the cause of Islam. और जो वक्त फारिग होगा उसके अंदर दीन की खूब खिदमत करूंगा, इस्लाम की खूब खिदमत करूंगा. as well as make some kind of contribution to academia. और इसी तरह इल्मी दुनिया के अंदर भी कुछ मवाद ताज़ा करूंगा. I am therefore inclined towards accepting this offer. इसलिए मैं कॉलेज की नौकरी कबूल करना चाहता हूँ दारुल देवबंद की नौकरी छोड़कर. So इस पर फरमाने लगे शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, however opposed this. उन्होंने शेखुल हिंद ने इसके बारे में अपनी राय मुख्तलिफ पेश की. फरमाया, मौलवी साहेब, I do not think you will be able to serve the cause of Islam as much as you do here. कि मैंने समझता कि तुम कॉलेज के अंदर इस्लाम के मकसद इस्लाम के फैलाने में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले पाओगे जितना यहाँ लेते हो, इसके बिलमुकाबिल कम लोगे. Although शेखुल हिंद was not convinced, शेखुल हिंद ने अपनी राय दे दी कि कहा मुझे समझ नहीं आता. He let him take up the job at the college. और ये बड़ों की शान होती थी, वो किसी को मजबूर नहीं करते थे. कहे कोई बात नहीं, आप कॉलेज वाली जॉब ले लो. जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत थी, उसका नाम बरीरा था. बरीरा. There was a lady in the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam called Barira. She was a slave and her husband was a slave. And later on, her husband was a free man and she was a free woman. So in those days, the masail, the rulings were, as soon you get the freedom, the lady has a choice either to accept the same husband or to take a release from him and get married somewhere else. So and when they both were slaves, they were bound. And when they both became free, Barira radiallahu anha, she had a choice that if she had to take the husband, she will take him as a husband, or she will take a release and marry somewhere else. So, and her husband found out now she will have a choice
to leave me or to accept me, because she is a free woman now. So he started convincing her, please don't leave me. If you have any doubts, please don't have second thought, and don't leave me. So she said, it's my decision, I will take it. And then he knew that she will leave him. उनको पता था कि बरीरा मुझे छोड़ देगी. So he went to Prophet sallallahu alaihi wasallam and said to Prophet sallallahu, oh Prophet, please explain her, not to leave me. I want to stay in the marriage. बच्चा जैसा कहते ना, इस तरह से गुजारिश की. बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु के पास आई. So Prophet sallallahu alaihi wasallam, when she came to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Prophet sallallahu alaihi wasallam said, oh Barira, this man is seeking from you, is pleading to you that you should keep him within the marriage and don't take release from him. So Barira radiallahu anha, she said, O Prophet of Allah, is this a command of you or it is a mashura from you? So Prophet sallallahu alaihi wasallam said, it's not my instruction. ये मेरा अमर नहीं है, ये मेरी राय है. It's not my instruction, it's just my opinion. So then she says, O Prophet of Allah, I have made up my mind, I want to take a release from him. So that was the beauty of our elders. So he said that my opinion is not to leave the job in Darul Uloom Deoband, but it's up to you. If you want to leave, you can leave. So after consulting him, he left. So after a year, he returned back to Darul Uloom Deoband. And during the holidays, and called on Shaykh al-Hind. After greeting him, asking about his well-being, he inquired, how many books and juristic rulings have you produced? So after a year, he came back to Darul Uloom Deoband and he said, how many books you have produced? Shaykh al-Hind asked him, you said you will have more time for the cause of Islam than here. So how many books you have produced? And how many rulings you have produced? Kitne kitabein likhi? Kitne masail likhe? And how many public lectures you have delivered during the course? Or kitne bayanat kiye daurane saal? Upon hearing this, he burst into tears and said, ये सुनने पर वो रोने लगे और कहा, I was not convinced by the logic of your viewpoint. मैं उस वक्त आपकी राय से मुवाफिकत नहीं कर रहा था. However, you have been proved right. हालांकि इस बात का मुझे अब यकीन हो गया, आपकी बात सही थी कि दारुल में रहकर ज्यादा काम कर पाओगे बनिस्बत कॉलेज में रहकर कम कर पाओगे. Although I had more time there, I could not accomplish any of things that I used to manage at Darul Uloom in the face of very, very busy schedule. कि मेरे पास बावजूद ये कि बहुत वक्त था, और मैं इसमें लिखा नहीं हूँ ना, मैं कह रहा हूँ बावजूद इसमें कि वहाँ सैलरी भी ज्यादा थी, मगर जो काम मैंने दारुल उलूम में किया वो उससे बदरजा ज्यादा है जो मैंने कॉलेज के अंदर किया. इसलिए कि जब इंसान दीनी इदारों में रहता है और दीनी माहौल में रहता है और दीनी अल्लाह वालों की सोहबतों में रहता है, when the person spends his time in the very pure Islamic atmosphere with around the pious shuyukh, pious scholars, Allah wale, because in hadith it says, al-barakatu ma'a akabirikum, the barakat lies within your elders. So when you stay around them, there is so much barakat in everything, in your life, in your work, in your sustenance, everything. May Allah subhanahu wa ta'ala make us from those who follow the footprints of our elders. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Subhanallah alhamdulillah. Subhanakallah.